human brain, we will discuss about in human brain and brainstem. Brainstem is the underneath the limbic system in the is the brainstem. Beneath the limbic system obviously lie brainstem, as this is discussed in this line. This structure is responsible for basic vital life functions such as breathing, heartbeat, and blood pressure. It is composed of the hindbrain plus the midbrain minus the cerebellum, as it includes hindbrain plus midbrain but not include cerebellum. It is also known as reptilian brain because it is considered the entire brain of reptiles. Entire brain of the reptilian. So here it is clear that hindbrain and midbrain is also lie in the reptiles, but they do not have cerebellum, so it is also called as reptilian brain. Scientists say that this is the simplest part of the human brains because of the animals' entire brains, such as reptiles, who appear early on the evolutionary scale, resemble our brainstem. Thus, brain system is made up of midbrain, pons, and medulla. Brain system includes midbrain, pons, and medulla. As we are related to reptiles, so the minus cerebellum. So simply it means कि cerebellum जो होता है वो reptiles में नहीं होता, और हम लोग resemble करते हैं reptilian के साथ. ये हमारी evolutionary scale ने क्लियर किया है. Next we are seeing in this picture telencephalon, diencephalon, metacephalon, mesencephalon, and myelencephalon. Telencephalon covers the whole part, diencephalon little bit smaller size, meson at the middle side, meten as at the lower beneath beside the spinal cord, and myelin is below at the spinal cord. Gray matter and white matter, as we are familiar with the gray matter and white matter, is found in the CNS or central nervous system, or you can say it in the brain. The central nervous system is comprised of the white and gray matter. In the spinal cord, the cerebrum gray matter is surrounded by the white matter. Gray matter is surrounded by the white matter. However, in the cerebellum and cerebral hemisphere, that is reversed with the gray matter surrounding underlying the white matter. cerebellum के अंदर क्या होता है कि जो ये इसके रिवर्स होता है. ग्रे मैटर जो होता है वो आउटसाइड नहीं होता, वो सराउंड नहीं कर रहा होता, बल्कि ये होता है कि ग्रे मैटर सराउंडिंग underlying the white matter. Okay, gray matter is major component of the central nervous system. In the central nervous system, gray matter is very important, so we will discuss in detail here. Gray matter consisting of the neuronal cell bodies, neurophils. Neurophils are the dendrites and myelinated as well as unmyelinated axons. Axons are found in the neurons, a major part. Glial cells. Gray matter is distinguished from the white matter in that here it is we are discussing now about the difference between the gray matter and the white matter. Gray matter is distinguished from the white matter in that it contains numerous cell bodies and relatively few myelinated axons, while white matter contains relatively very few cells bodies and composed chiefly of the long range myelinated axons. Okay, it contains numerous cell bodies, relatively few myelinated axons. Few myelinated axons found in the gray matter, but in the white matter contain relatively few cell bodies but major portion of the myelinated axons. Okay, it is present in the brainstem, cerebellum, and
are present throughout the spinal cord. Gray matter is found in the brain, brainstem, cerebellum, and throughout the spinal cord. The gray matter includes regions of the brain involved in the muscle control and sensory perception, such as seeing, hearing, emotions वगैरह सब कुछ ग्रे मैटर कंट्रोल करता है. ये 40% ऑफ द होल ब्रेन सेल होता है और कंज्यूम करता है 94% ऑक्सीजन ऑफ द ब्रेन. एंड न्यूरॉन्स जो होते हैं ग्रे मैटर के, वो डू नॉट एक्सटेंड एक्सॉन्स और लॉन्ग थिन प्रोजेक्शंस ऑफ द न्यूरॉन्स दैट सेंड. ये जो होती हैं वो थिन प्रोजेक्शंस ऑफ द न्यूरॉन्स, इसमें एक्सॉन्स नहीं एक्सटेंडिंग होती. एंड दैट सेंड्स सिग्नल्स फ्रॉम द सोमा सेल्स से सिग्नल सेंड आउट करता है. न्यूरॉन्स जो होता है वो क्रिएट करता है नेटवर्क्स को, और ये सिग्नल्स जो होते हैं उसमें ट्रेवल नहीं होते. ये ग्रे मैटर की बात हो रही है. फ्रॉम द डेंड्राइट्स टू द एंड ऑफ एक्सॉन्स, सिग्नल्स रिप्रोड्यूस in the neural membrane by way of electrical मोड की तरह फर्स्टली इसमें सिग्नल सेंड आउट हो जाते हैं. न्यूरॉन्स डू नॉट मेक बॉडी कॉन्टेक्ट विद ईच अदर बाय व्हेन कन्वेइंग द मैसेज. न्यूरोट्रांसमीटर्स सर्व्स एज अ मीडियम टू कनेक्ट. न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो सिग्नल्स सेंड आउट करने के केस में एक्सॉन्स वगैरह लॉन्ग डिस्टेंसिंग के लिए मैसेज सेंड करने के लिए नहीं होते. वाइट मैटर जो है वो CNS में कंपोज्ड होता है. माइलिनेटेड एक्सॉन्स इसमें होते हैं और बहुत कम ही इसमें न्यूरोनल बॉडीज़ होती हैं. जो होता है नर्व इम्पल्सेस जो होते हैं वो इसी के थ्रू सेंड होते हैं एज़ कम्पेयर टू द connects the various gray matter regions of the central nervous system to each other and carries nerve impulses. Myelin जो होती है the lipid that myelin जो होता है that is lipid that forms a thin layer known as myelinated sheath. Myelinated sheath is very important, which is found in the white matter, found by the white matter, and in electrical impulse सेंड करने में हेल्प आउट करता है. और ये क्या होता है कि वाइट मैटर जो होता है उसको हम सब्सटेंशिया एल्बा भी कहते हैं, जो कि मेड ऑफ एक्सटेंडिंग माइलिनेटेड नर्व एक्सॉन्स वगैरह से बना होता है. एज वी आर डिस्कस्ड अबव टू दिस स्लाइड. It composes of the structures that are the center of the brain, the thalamus and hypothalamus. इसके अंदर ब्रेन के थैलेमस, हाइपोथैलेमस और ब्रेन का CNS भी होता है, यानी मेन पार्ट भी होता है. और इसके अंदर ये जो होता है ये किस ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम के दरम्यान में पाया जाता है. वाइट मैटर जो होता है वो कम्युनिकेशन के तौर पे एक्ट करता है और फंक्शन करता है नर्व ट्रांसमिट करने में, हेल्प आउट करने में, ट्रांसमिट द सिग्नल्स. ओके. It also controls some functions that the body is unaware of, the temperature and blood pressure and heart rate, dispensing of hormones and control of food. ये इसका काम होता है. वन ग्रे मैटर इज मेड अप ऑफ नर्व सेल बॉडीज से बना होता है, नर्व फाइबर से बना होता है. इसमें जो होता है एक्सटेंडेड डू नॉट हैव एक्सटेंडेड एक्सॉन्स. जो होता है 40% ऑफ ब्रेन ऑक्यूपाई करता है. और वाइट मैटर ग्रे मैटर जो होता है वो 40% करता है, और ये जो होता है ये 60% करता है. और ये क्या करता है कि ग्रे इन कलर होता है ग्रे मैटर जो वाइट, और इसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियाई होते हैं. ये डिफरेंस है. माइलिन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, वाइट मैटर के वाइट अपीयरेंस में, और इसके अलावा ग्रे मैटर जो होता है वो कम्युनिकेशन को अलाउ करता है. जबकि और क्या करता है कि कम्युनिकेशन जो होती है वो किससे बनती है, वाइट मैटर के थ्रू. ग्रे मैटर जो होता है वो माइलिन जो है, इसके पास माइलिन शीट नहीं होती, लेकिन वाइट मैटर जो होता है वो माइलिन शीट होता है. नेक्स्ट अब हो जाते हैं ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन हैज़ द सेम जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द मैमल्स बट हैज़ नो मोर डिवेलप्ड कॉर्टेक्स देन एनी अदर. अच्छा, इसके अंदर कॉर्टेक्स ह्यूमन्स के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरीन डेवलप हुआ होता है. लार्ज एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि इंसेंफिलाइजेशन होती है, जो कि कंपनसेट करने के लिए डॉल्फिन वगैरह और चिंपैंजी वगैरह में जो होता है कंपनसेशन के लिए होती है मौजूद. उसके बाद हम मच ऑफ द एक्सपेंशन कम्स ऑफ द
फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ज़्यादा एक्सपेंशन किससे आती है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, स्पेशली फ्रंटल लोब जो उसका होता है उससे, विच आर डिसोसिएटेड विद द एग्जीक्यूटिव फंक्शन सच एज प्लानिंग वगैरह, सेल्फ कंट्रोल, प्लानिंग, रीजनिंग, ये सब कुछ उसके अंदर डील आउट होता है, यानी उसकी इनकलकेट करके हमारी बॉडी के अंदर ये उसका पार्ट है या उसका फंक्शन है ये। द पोर्शन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स डिवोटेड टू द विजन इज आल्सो ग्रेटली इनलार्ज इन ह्यूमंस। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो विजन के लिए भी होता है। स्टेगोसॉर्स जो डायनासोर्स हैं उनका वेट जो होता है वो 16,000 kg था, बट हैड अ ब्रेन दैट वेट अबाउट 70 grams। therefore human brains was only 0.04% of its total weight, total body weight। अच्छा, जो है ना डायनासोर उनके अंदर 70 ग्राम्स था, बट अगर बॉडी का हिसाब लगाया जाए तो हमारा जो ब्रेन है वो 0.004% ऑफ द बॉडी बनता है। अच्छा, अडल्ट ह्यूमन का वेट जो है वो 70 kg का क्या है कि उसका 1.4 kg होता है। देयरफॉर द टोटल द ह्यूमन ब्रेन इज़ अबाउट 2% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। उसका 0.04% था, ये डायनासोर का था। और अगर हमें ह्यूमंस की बात करें तो 2% ऑफ द इट्स बॉडी वेट है। दिस मेक्स द ब्रेन टू बॉडी रेशियो ऑफ द ह्यूमंस 500 टाइम्स ग्रेटर देन द स्टेगोसॉर्स। स्टेगोसॉर्स में अगर देखा जाए तो 500 टाइम्स मोर ग्रेटर है हमारा ब्रेन। एवोल्यूशन कैसे हुई थी ब्रेन की? माउस, कैट, डॉग, रेस, चिंपैंजी एंड ह्यूमन की अगर देखें तो उनके ब्रेन्स ऐसे हैं। अच्छा, अगर हम देखें एवोल्यूशन की तो जो साइंटिस्ट हैं वो या थिंकर्स हैं जो वो बिलीव करते हैं कि ये कम्प्लेक्स मशीनरी है ह्यूमन के पास, और ये स्लोली जो है वो सिंपल फॉर्म से स्लोली इवॉल्व हुई थी। और ये जो है फैसिनेटिंग इसका स्ट्रक्चर है सारा, अडेप्टिव इसमें सारी चीज़ें पाई थी। फर्स्ट स्टेप जो था वो डिज़ाइन, फिर इन्वायरमेंट के साथ साथ इसके इंटरचेंजिंग होते होते ये एवोल्यूट हो गया। फिर उसके बाद एप्स, मंकीज़ वगैरह में अगर देखें तो उनका इस तरह से ब्रेन है, लेकिन अच्छा, और अगर हम देखें सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में उसमें ब्रेन जो होता ही नहीं है, जैसे अमीबा के अंदर ब्रेन की है ही नहीं सिरे से। डज एनाटॉमिकल सिमिलरिटी ऑफ द ब्रेन सजेस्ट दैट बिहेवियर्स दैट इमर्ज इन द स्पीशीज आर आल्सो सिमिलर बट सम हाउ, कुछ हद तक सिमिलर हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो डिफरेंट हैं। लेकिन ब्रेन की कैपेसिटी जो है वर्किंग की वो ज़्यादा ह्यूमंस की है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि हमने रिप्टाइल की एग्जांपल अबाउट द स्लाइड्स पढ़ी है। अच्छा, इंडीड मैनी एनिमल्स डिस्प्ले बिहेवियर दैट आर सिमिलर टू ह्यूमंस। एप्स के जो नॉन वर्बल बिहेवियर वगैरह सिमिलर हैं। अच्छा से यानी ये शो करता है कि एवोल्यूशनरी लिनिएज है हमारी और एप्स के दरमियान। इफ़ वी स्टडी वेरी वेरी सिंपल बिहेवियर्स लाइक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज मेड by individual neurons and brain-based behavior of invertebrates look very similar to humans, suggesting that from the immemorial such basic behaviors have been conserved in the brain. Many simple animal forms and much but complex behaviors in animals that are evolved later. Okay. Now the next is even the microanatomical level. It is noted that in wheels intricate, for example, neuronal processes in humans have more. Okay, ये ऑब्वियसली ये डेफिनेटली ये ह्यूमन ब्रेन जो है वो मोर डेवलप्ड है, इसमें डेंड्राइट्स इसमें सारे कुछ ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर, बट दे आर एट समहाउ लोअर लेवल in the CNS point of view or the brain point of view. Other organisms are. Why do I shiver when I am cold? As our body gets signal when we feel cold, why we shiver? Why हम क्यों कांपते हैं? द बॉडी ऑलवेज, जब हमें कोल्ड या ठंड लग जाती है, द बॉडी ऑलवेज वर्क्स एट कीपिंग इट्स टेम्परेचर एट द कॉन्स्टेंट लेवल. यू प्रोबेबली नो द
the temperature is 98.6 Fahrenheit. At this temperature of the cells of the body were best. अच्छा, जब ऑप्टिमम टेम्परेचर बॉडी का होता है और बॉडी मेंटेन होती है अपनी टेम्परेचर के ऊपर, तो वो डेफिनेटली वर्क जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करती है। लेकिन अगर उसका डिस्टर्ब किया जाता है मैकेनिज़्म, इस कोल्ड शिवरिंग प्रोसेस को डिस्टर्ब किया जाता है, तो वो ऑब्वियसली डिस्टर्ब होगी और वो शिवर करेगी। ये फंक्शन किस तरह से CNS किस तरह से इसको प्रोसीड करता है, किस तरह से लेके चलता है कि इन द थैलेमस hypothalamus there is an area that controls heat, thirst and other body functions. hypothalamus जो है वो कंट्रोल करता है हीट और अदर बॉडी फंक्शंस को। अच्छा, when you get too hot or too cold, this center alters the rest of the body, so you cool up or warm. हाइपोथैलेमस जो होता है वो ट्रिगर आउट करता है जब आपको शीवर करना होता है इन द कोल्ड कंडीशन, क्योंकि आपकी रेस्टिंग कंडीशन जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। On a very cold day you may start shivering. The heat control center in the hypothalamus has sent a message to your muscle to move very rapidly. Work is being done by the muscles and heat is given out of. When muscles shiver 2 to 4 times more than heat can be given off. The extra heat helps to keep your body warm. Why do I get a fever when I'm sick? The another question, that is logical or reasoning question. A common cause of fever is infection. अगर हमें इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें फीवर हो जाता है ऑब्वियसली। तो ये फीवर होता क्यों है, इसको अगर हम देखें तो ये जो होता है इन्फेक्शन जो होता है वो कॉज करता है, एक्टिवेट करता है ब्रेन के सेल्स को, जिसको हम ब्रेन सेल कौन से हाइपोथैलेमस को, जो कि एक साइट मटीरियल जाके यानी इन्फेक्शन की साइट पे जाके एक्ट करेगा और वो ब्लड स्ट्रीम में मूव करेगा, सिग्नल बॉडी का कंट्रोल सेंटर तक जाएगा। कंट्रोल सेंटर तक जाने के बाद क्या होगा, वो रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स करते ही वर्क फास्टर करना शुरू कर देगी हमारी बॉडी। जब वर्क फास्टर करेगी यानी उसके रिएक्शन में अगेंस्ट वर्क करेगी तो ऑब्वियसली हमें फ़ीवर हो जाएगा। और जो फास्ट वर्किंग सेल्स जो होते हैं वो एबल टू मेक मोर एंटीबॉडीज़, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ और बनती हैं जो कि इस फीवर जगह इन्फेक्शन की जगह से पे जाके एक्ट करेंगी। जब एक्टिंग ज़्यादा होगी या एक्शन ज़्यादा होगा या वर्किंग ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली हमें फ़ीवर हो जाएगा। द फीवर आल्सो मेक्स द बॉडी टू हॉट एंड इन्वायरमेंट for bacteria to live in. Unfortunately, the fever may also makes you feel sick. जब ये ज़्यादा वर्किंग होगी ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली यू गेट में sicker. That was all about hindbrain and bloodstream and shivering or fever में and evolution of nervous system, grey and white matter.